आरंभ करवा पल्सा टेट आमर आज प्रसंग होउछि राफेल उड़ाइबे महिला। ये होउछि वर्तमान सबुठु बड़ खबर एवं भल खबर बोली कहा जाई परिबो। खूब शीघ्र वायुसेनार महिला पायलट उड़ाइबे राफेल फाइटर जेट। एबे वायुसेनार 10 जन पायलट महिला पायलट फाइटर जेट चलाउछन्। सेमानक मध्यरु जणे राफेल उड़ाइबे। फ्रांस प्रथम पर्यायर आसीथिबा 5टी राफेल सेप्टेम्बर 10 तारिख रे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन रे शामिल होइथिला। वायुसेना रे रणनैतिक आवश्यकता को देखि महिला लड़ुआ पायलट प्रस्तुत करा जाउथबा कहा जाउछि। तेबे प्रसंग अधिक आलोचना करिबा एवं तथ्य भीतर को जिबा ए प्रसंग अधिक आलोचना पई आम सहित आम अतिथि जोड़ी हिलेनी। आम सहित अछंती लेडी कमांडांट कर्नेल ललिता पटनायक एवं आम सहित सीधा सड़क रहिबे आउ जने अतिथि तांको सहित मध्ये आलोचना करिबा एवं विभिन्न दिग उपर आम अधिक आलोचना करिबा। कारण ए दिग अधिक एथिपाई गुरुत्वपूर्ण कारण वर्तमान महिला निजर पारंगमता देखैबे। उत्पल कुंडू आम सहित अछंती विंग कमांडर तांको मध्ये स्वागत करिबा। मैडम मु प्रथमे आपनक पाखु आसबी। कर्नल पटनायक आमे एक कथा कहि परिबा कि वायुसेना रे गोटे ऐतिहासिक समय फाइटर जेट उड़ाइबे महिला। Again, fighter pilot, whether it's a woman pilot or a male pilot, the gender doesn't make any difference. The machine doesn't know the gender. It is a person who can fly, and everybody has to take the training, and one must have that inner feeling and guts for flying. And female or male doesn't matter because everybody is given the same training. They have to undergo the same stress, and if you have put your mind, heart into it, gender bias is not there, so they can do anything. And we already have about 10 female pilots, fighter pilots, and this is a very good start. And women also must reach very higher heights. मैडम गोटे बड़ा सुजोग कहि परिबा कि ए क्षेत्र रे वर्तमान महिला पायलट निजको प्रूव करिवार गोटे बड़ा स्कोप पाइबे। ने कहले वर्तमान महिला पायलट लड़ुआ विमान उड़े निजको प्रूव करिवार गोटे बड़ा स्कोप पाइबे। नहीं प्रूव करिवार नहीं। If you are talking about only female or women pilots, there's nothing to prove because no money equally both male or female, there's no gender bias as such. This is the training you go, and there's nothing to prove to the world that they are ladies can do. Apan international very equally equal opportunity to both. एमती किसी प्रूव करिवार नै, and they can do it and they're doing it. That is the proof of the pudding lies in eating. So they are doing it, they have done it, and they will do in future also. ओके मैडम आपन को टिके खाली अटकेबे। उत्पल कुंडू मध्य आम सहित अछंती विंग कमांडर सर आपन को भी स्वागत करबी। आमे कथा कहि परिबा कि बैड बॉय को एवे सवार करिवे महिला पायलट। नमस्कार। 2016 रे जेतबेले प्रथम अनाउंसमेंट हला कि फाइटर पायलट्स विल कम इनटू द एयर फोर्स तागरे माने देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ लेडी ऑफिसर्स इन द मिलिट्री एज डॉक्टर्स। 1996 रे मो संगे माने फर्स्ट टाइम लेडी ऑफिसर्स केम इनटू द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम, एंड 1999 रे कारगिल रे मो संगे से माने काम करछंती। तो आई हैव सीन द लेडी ऑफिसर्स फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। But I'm not only saying as an observer, I'm saying as their colleagues. But they have worked with me for years together. And 2016 में जब ये decision नियाला कि they will start flying fighter jets. So my wife's first reaction was भारत वर्ष गोटे golden bird जाको सुनार होते चिड़िया कुआ जाए। बिल्कुल सही माने पक्षीटा दीटा डेना जेतबे इक्वल भाबरे काम करिवो तेबे जाई माने भारत वर्ष आगे बढ़िवो। दीटा डेना किए ना गोटे होची द मेल एंड सेकंड डेना होची द फीमेल। ओनली व्हेन भारत एज अ नेशन लुक्स एट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी तेबे यही भारत श्रेष्ठ होबो और वी विल लीड द वे फॉर एवरीवन। So 2016 that was a very good decision, and these lady fighter pilots have proved themselves. And Rafale and they are being inducted into the Rafale, and they will be everywhere.
माने आजिकली माने आम्ही कुहाउची खाली 10 जण फाइटर पायलट अछती and in the near future you will find that the number of lady fighter pilots and the number of male fighter pilots will be 50-50 if not more. आज्ञा सर आम एक भी कहीपर कि बर्तमान लड़ुआ विमान उड़ेबे महिला ए खबरटी महिला को खास करके अधिक प्रोत्साहित कर तमाम विभिन्न क्षेत्र में काम करुवा महिला को प्रोत्साहित करने सहित से गोटे जोश दब आग को बढ़ापी गोटे आम कहीपर गोटे कीर्ति जोगैब एम मन में गोटे साहस रदि आम महिला फाइटर जेट उड़ाई पार्टी आमे कहीं आग को जाकि कीर्ति रचि पारिबा नाही. Absolutely. But these are all milestones for Bharat. Eta onno desare hei sarichi for India. These are the first of milestone. Because there is I will not say gender bias. I will say that the society as such was not that liberal. Mane amo purna jodi ame history dekhibu, we have respected women as Shakti. Actually, they are the part. Mane mu jodi kahibi jodi mane when I have observed the ladies from as a counterpart in a helicopter, I have seen that at times they are capable of taking better decision than their male counterpart. Because in the same situation, I have seen what a young male flying officer will do, and I have seen what a female flying officer does. And at times I have seen that the reactions are much more better. So, this should encourage more ladies to join the nation, the armed forces, and do their bit for the nation. कर्नल पट्टनायक मु आपन को पाखक आसी मैडम आम एक भी कहीपर कि ये गोटे मात्र आरंभ आगु को जाकि आहुरी लड़ुआ विमान उड़ेबे महिला पायलट. निश्चय एक्चुअली जो स्टेप नहीं दैट lady pilots or women fighter pilots actually salute to the armed forces. ये जो जेंडर इक्वालिटी की माने चांस दबा लेडीज मन को विमेन मन को actually this has started with the armed forces. बिल्कुल. Armed forces have got long history as medical profession. The lady doctors that were inducted into army as army medical corps long back. And the whole of military nursing service, it is all ladies who had joined as the nursing service. So armed forces definitely gives equal chance to all, both the genders, and this has definitely proved that even as a fighter pilot, ladies can do, and they are doing also. And gradually, of course, it started off in 2016, as he said, that the then Defense Minister, Manohar Parrikar, was the one who inducted almost 3 ladies as fighter pilots. And people must be knowing their name also. That was Avani Chaturvedi, Bhavna Khan, and Mohana Singh. They flew the fighter pilot MiG-21 Bison, which is the fastest aircraft while taking off and landing. If they could do this, that, so they will do this also. That will also be flown, and many more achievements. Probably a day would come when the fighter pilots will be equal, both female and male, and I would definitely look forward to see that day. मैडम एक भी कहीपर कि वर्तमान आर्मी रे स्थायी कमिशन पर ये बोधे बड़ पदक्षेप आउ गोटे क्षेत्र में अगर एक्चुअली मु कहली आर्म फोर्सेस ओनली द मेडिकल प्रोफेशन हैड द लेडीज as in the nursing service and all. Later on, just about 2 years back, you can say about 20 years, 15-20 years, or maybe less than that. Then the women were started taking the armed forces, and actually initially they were taken into the services, but not in the fighting forces like what we say infantry or all those. But gradually, and they were being given only short service commission. But now they are being given permanent commission. They are into all the services in the armed force. Army is a service section, and Air Force basically they were doing ground service. But of late they are coming to the flying cadre also. And you see, this is the example how well they are doing. So at least armed forces had never any gender bias. And I served for 32 years in the army. As a colonel, I retired. I commanded a hospital at the border, and I never felt there was any inequality or there is a different attitude or behavior towards the lady doctors or the ladies, and it was never felt.
And so it is a salute to the armed forces. बिल्कुल मैडम केवल आपण नुहंती जो माने भी अछंती जो माने भेदभाव देखंती पुरुष एवं महिला क्षेत्र में आम एक कही परिबा सेमानक मन रे प्रश्न दूर हो जाइथिबो जे जेउ काम पुरुष करूछंती से काम महिला मध्य करि परिबे एवं ए क्षेत्र में महिला मध्य निजको प्रूव करिवे आशा समस्तंकर रहिबो। धन्यवाद मैडम अधिक आलोचना पाई लेडी कमांडेंट कर्नल ललिता पटनायक आम सहित रही उत्पल कुंडू मध्य आम सहित अछंती सर मु पुणी थे आपनक पाखको जीवी एवं से प्रश्न आपनक आगे मोर रहिबो जो माने भी प्रश्न उठाउतले ए काम पुरुष करि परिबे ए काम महिला केवल करि परिबे किंतु वर्तमान आउ भेदभाव रहिबो नाही जो काम पुरुष करि पारंती महिला मध्य करि परिबे जार उदाहरण होउची ए खबरटी। Absolutely. माने मु तो देखि आछि माने आर्म फोर्सेस इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो जेंडर बायस, देयर इज नो रिलीजन। आम पाई गोटी होउची दैट इज नेशनलिज्म इज टू बी रेडी टू ले डाउन माय लाइफ for the nation. अब यही जिनसटा मु इक्वली देखे छी इन men as well as women. जो माने जो इमोशन ऑफ पैशन संगे जो मदरलैंड पे गोटे काम करियो that is there in the armed forces and the gender bias is set उल्टा हुए the officers and the men of the armed forces they give a lot of respect to the ladies. ଆପଣ कोन गोटे ऑफिसर्स में से देखिए जदि 10 जन ऑफिसर्स बसी जंती आ जने लेडी से रूम रे एंटर करूचंती all the 10 officers will stand up, then they will keep standing till that lady sits down. That is the respect that is ingrained in the defense forces for the ladies. So gender bias is not at all there in the armed forces. Equal opportunity is given to all the to the ladies especially. And it is and we must that India must lead the world by having equal number of fighter pilots in the armed forces. बिल्कुल बिल्कुल सर एक खबर आम कही परिबा सेना सहित जोड़ी हुई रहितिबा समस्त महिला सेना कर्मचारी अधिकारी यह सहित सेना सहित जड़ित समस्त जवान को मध्य उत्साहित करिवो एवं ए खबर निहाती भाव में एथि गुरुत्वपूर्ण महिला एवं पुरुषों भितर जो भेदभाव तैयारी करा जाउतला अंततपक्षे ए खबर शुणी सारिबा परे आउ केही भी ए कथा कहि परिबे नाही जे पुरुष माने जो काम करि पारंती महिला सही काम करि परिबे नाही एवं वर्तमान या गोटे खुशी खबर कहि परिबा जे लड़ुआ विमान उड़ाइबे महिला माने। धन्यवाद सर अधिक आलोचना पाई। उत्पल कुंडू आम सहित रही विंग कमांडर एवं अधिक आलोचना संपर्क में करुले किंतु बड़ दिगटी होउची एथिपाई अधिक गुरुत्वपूर्ण ए खबर आमे नेलु आम प्रसंग रे कारण महिला एवं पुरुषों भितर गोटे बड़ तफात तारतम्य देखा मिलता है एवं तारी भितर जदि कौन बड़ स्कोप मिलूची महिला को एवं भारतीय सेना रे एभली एक बोल्ड स्टेप निहा जाउची महिला क्षेत्र में यह निहाती गोटे बड़ प्रसंग गोटे भल खबर बोली कहुई पार एवं महिला को उत्साहित करने दिगरे एक बड़ स्टेप बोली भी कहुई पारे।